वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. So I'd like to welcome all the devotees for Saturday evening Bhagavad Gita study class. सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार के साप्ताहिक संध्याकालीन भगवत गीता के अध्ययन के सत्र में। And we are very fortunate today to hear from His Grace Namavatar Krishna Prabhu. तो आज हम सबको श्रीमान नामवतार कृष्ण प्रभु से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा और प्रभु जी से जब भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है हम सब बड़े उत्साहित रहते हैं उनसे सुनने के लिए। We all are eagerly we wait to hear from Prabhu. He is engaged in so many services, very sweet personality. The entire family is so wonderfully serving the mission of Srila Prabhupada to best capacity. और प्रभु जी को हम देख सकते हैं कि जितनी भी सेवाएं हैं यहाँ पर इस समय कन्या देश में लगभग सभी सेवाओं में प्रभु युक्त हैं और वो बिल्कुल पीछे से सेवा करते हैं, आगे बिल्कुल नहीं आते हैं। पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है, माता जी बच्चे, और एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, एक आदर्श गृहस्थ जीवन का। The very wonderful example, the entire family setting as a ideal grihastha family, so that all of us we can look at them, we can learn from them.
तो ऐसे भक्तों का होना हम सबके समक्ष, हम सबके बीच में, ये बहुत कृपा है, क्योंकि ये पूरा मिशन जो है श्रील प्रभुपाद जी का, इट इज लेड बाय एग्जाम्पल्स, एंड व्हेन वी हैव सच एग्जाम्पल्स amongst us, it becomes easier for other devotees to follow, all of us to follow them, to learn from them, to see how they are very nicely, very humbly taking care of all their responsibilities and how nicely they are making progress in spiritual life. तो ये सब प्रभु से बहुत सीखने को मिलता है हम सबको, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से। तो प्रभु जी से जब भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो जैसे वो पूरी गंभीरता के साथ में सेवा में युक्त हैं, वही गंभीरता का हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वाणी के माध्यम से हमारे हृदय में भी प्रवेश करेगा। So let's welcome प्रभु जी by taking shelter of the holy name all together. हम सब मिलकर के प्रभु जी का स्वागत करेंगे भगवान के नाम का आशीर्वाद देते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Krishna Krishna. हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज प्रभु जी। Hare Krishna. So we welcome all the devotees for our weekly satsang for Bhagavad Gita as it is. So नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयासु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. So we will read the text. Today's is we are discussing about the most confidential knowledge. Text number chapter 9, text number 34. Very celebrated sloka. We'll read. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Yevaishyasi Yuktvaivam Atmanam Matparayanaha Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Yevaishyasi Yuktvaivam Atmanam Matparayanaha Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Yevaishyasi Yuktvaivam Atmanam Matparayanaha. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव शशि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। Synonyms: Manmana, always thinking of me. Bhava, become. Mat, my. Bhaktaha, devotee. Mat, my. Yaji, worshipper. Mam, unto me. Namaskuru, offer obeisances. Mam, unto me. Eva, completely. Yasyasi, you will come. Yuktva, being absorbed. Evam, thus. Atmanam, your soul. Mat Parayanaha, devoted to me. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation: engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. Purport: in this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. Sometimes
Unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. Krishna is not an ordinary human being. He is absolute truth. His body, his mind, and he himself are one and absolute. It is stated in the Kurma Purana, as it is quoted by Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami in his Anubhashya comments on Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, Adi Leela, verses 41 to 48. Deha Dehi Vibeduyam Anisware Vityate Pachit. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. But because the commentators do not know the signs of Krishna, they hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. Although this is sheer ignorance of the signs of Krishna, some men make profit out of misleading people. There are some who are demonic. They also think of Krishna but enviously, just like King Kamsa, Krishna's uncle. He was also thinking of Krishna always, but he thought of Krishna as his enemy. He was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. That kind of thinking will not help us. One should be thinking of Krishna in devotional love. That is bhakti. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. What is that favorable cultivation? It is to learn from a bona fide teacher. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material but is eternal, blissful knowledge. This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise from the wrong source will prove fruitless. One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the Supreme. He should engage himself in worship. There are hundreds of thousands of temples in India for the worship of Krishna, and devotional service is practiced there. When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. One should lower his head before the deity and engage his mind, his body, his activities, everything. That will make one fully absorbed in Krishna without deviation. This will help one transfer to Krishna Loga. One should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. Pure devotional service is the highest achievement of human society. The 7th and 8th chapters of Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, and fruitive activities. Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahma Jyotir and localized Paramatma. But a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. There is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. The devotee in the beginning may sometimes fall from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be a perfectly saintly person. His accidental, non-devotional activities will diminish. He will soon be situated without any doubt in complete perfection. The pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotees.
Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. Thus end the Bhaktivedanta purpose to the 9th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of the most confidential knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। तो आई विल रीड इन हिंदी प्रभु जी। Yes, Prabhuji. तो हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 34वां श्लोक। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम 5वें अध्याय आदि लीला 41 से 48 श्लोक के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्यावश। जिस तरह के कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उसका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व को अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है, जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी, ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है।
कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना अमृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस प्रभुजी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातान् सगगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So once again we welcome all the assembled Vaishnavas for our Saturday Bhagavad Gita reading. So we are discussing the most confidential knowledge. So this is the last sloka of this chapter. Now, तो एक बार पुनः सभी भक्तों का स्वागत है आज के शनिवार के संध्याकालीन सत्र में। और आज हम सब 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 34 के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। so Adi Shankaracharya is glorifying about Bhagavad Gita, and in the text 6 he is saying Sarvo Upanishato Gavo Dokta Gopala Nandanaha Partho Vatsaga Sudhir Bhokta Duktam Gitamritam Mahat. So translation, all the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoy the nectar. तो भगवद गीता की भूमिका में ही प्रभुपाद जी ने गीता महात्म्य का वर्णन किया है और उसमें एक श्लोक में बता रहे हैं कि ये गीतोपनिषद जो है वो भगवद गीता ये समस्त उपनिषदों का सार है और ये गाय के तुल्य हैं और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं और अर्जुन उस बछड़े के समान हैं जो उसका पान कर रहे हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त वो भगवद गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। So in this description, in this Mahatmya, we can understand that how fortunate we are all, because all the Upanishads, like the Krishna is giving the essence, all the essence, and not only Arjuna,
So all the devotees who are following in the footsteps of Arjuna, we are also can able to take this nectar of the Bhagavad Gita. तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो भी भगवत गीता का पान कर रहे हैं, यहाँ पर सोचिए अर्जुन के समान जो भक्त हैं, सारे विद्वान और शुद्ध भक्त, वो इस भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने के लिए वो तरस रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वही ये पान हम सबको कराया जा रहा है इस दिव्य परंपरा में। So essence of essence. This 4 times we are saying this essence, like we can see how it is essence. This Bhagavad Gita is the essence of all knowledge. So one essence is Bhagavad Gita is the essence of all knowledge, Vedas, everything, the essence is Bhagavad Gita. The Lord is giving Bhagavad Gita to us as an essence of all the Vedas. तो ये सारे सभी सारों के सारों के सारों का सार है। 4 बार यहाँ पर सार शब्द आ रहे हैं कि जितने भी उपनिषद हैं, जो वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार जो है, ये भगवद गीता के रूप में भगवान ने प्रकट किया है। प्रभु, your slides are not moving, Prabhu. It is stuck on the first slide. Prabhuji? No, I could see only first slide here. So if you put a slide mode, and then you can probably okay, let's see. Anybody can confirm, because I'm first slide only. यशोमती प्रभु जी, आप क्या देख पा रहे हैं प्रभु? जी प्रभु, फर्स्ट स्लाइड। Now I will share again. Yes, प्रभु जी. Not coming, प्रभु जी? Now it's coming. No, it's coming. Essence of all knowledge. Yes. Yes, I'm sharing. Then I will share again, Prabhuji. Sharing. Loading. I think better. This view is better. Now you can able to see, Prabhuji? No, Prabhu. It's first slide. Earlier it was there, Prabhu. Now just before the few seconds, it was there actually. You can go to slide mode, Prabhu, full slide mode, and then probably it will come. It says past here, Prabhuji. 1 second. Slides. Why it is resume slide? Yes, here it is there, Prabhuji. Resume. Then okay. Show. I will. If you go to the full mode, it is passing. I will go like that, Prabhuji, here. Now you can able to see, Prabhuji? Yes, yes. Yeah. So the side slide also we will keep, Prabhu, so that it is easy for us. Okay. Okay. So the second essence of Bhagavad Gita is a Bhakti Yoga, chapter 7 to chapter 12. तो पहला जो सार है वो है कि जो जितने भी ज्ञान है उनका सार भगवत गीता, और दूसरा सार का सार की भगवत गीता के जो 7 से 12 अध्याय हैं वो गीता का सार है। 7 से 12 अध्याय जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया। And the essence of Bhakti Yoga is chapter 9 and 10 is considered the essence of this Bhakti Yoga. From chapter 7 to 12, 9 and 10 is the essence of that Bhakti Yoga. और तीसरा जो सार बताया गया यहाँ पर कि जो 7 से 12 अध्याय हैं उसका भी सार जो है वो 9वां और 10वां अध्याय है। The final is the essence of chapter 9 and 10 is said to be slogan number 34, 934. Manmana bhavo madbhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisesi yuktvaibam atmanam matparayanaga. Essence of essence of essence of essence is this slogan. और वो 9वें और 10वें का भी जो सार है वो सार है ये 34वां श्लोक जो आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए ये सभी शास्त्रों के सार के सार के सार का सार है।
sometimes we may hear that the Sarvadharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja sloga, but no difference, because this is the prior sloga, how one has to do this one. So this is the essence of all the essence from the Vedic scriptures. It condenses to the Bhagavad Gita, then comes to the Bhakti Yoga. From the Bhakti Yoga, from chapter 9 and 10, talks about the essence. And from the 9 and 10, essence is this sloga, Manmana Bhavo Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Evaisyasi Yuktvaivam Atmanam Matparayanaka. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है ये सभी शास्त्रों के सार का सार है। जैसे भी हमने श्रवण किया कि भगवद गीता के जो बीच के अध्याय हैं वो उनका सार है 7 से 12, उसका सार 9वां 10वां अध्याय और उसका सार ये 14वां श्लोक। So this sloga almost is repeated in the 18th chapter also, where we'll read only one last line is last 2 lines, little difference is there. There Krishna is saying, Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Evaisyasi Satyam Te Pridijane Priyosimi. So the same meaning, but there Krishna is promising, I'm promising you, like that you follow this process. और ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी पहली लाइन जो है पूर्ण रूप से 18वें अध्याय के अंत में भी आती है, जब भगवान का आखिरी जो उपदेश है, आखिरी कि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम क्या करो। तो वहां पर भी भगवान यही आदेश दे रहे हैं कि आप मेरे भक्त बनिए और अपना मन मुझ में लगाइए, मुझे ही नमस्कार करिए। और खाली आखिरी की एक छोटी सी जो पंक्ति है वो वहां पर थोड़ा सा परिवर्तित है, जहां पर वो उनको ये निर्देश दे रहे हैं और उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि उससे क्या प्राप्त होगा। So here Krishna talks about 4 things we have to do. One is engage your mind always in thinking of me. तो भगवान यहाँ पर 4 चीजें करने को बोल रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ। So second, Bhava Mad Bhakto, become my devotee. और दूसरा, मेरे भक्त बनो। Third one is Madhyaji, offer obeisances to me and worship me. और तीसरा, मुझे नमस्कार करो। Yeah. Then Namaskuru is like worship me. और मेरी ही पूजा करो। Puja karo. So this first point is Man Mana Bhava. Man Mana Bhava. Like Krishna is saying that, always thinking about myself. तो भगवान पहले कह रहे हैं सबसे पहले कि अपने मन सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे चिंतन करने वाला बनो, अपने मन को मुझ में लगाओ। So this, like we are thinking in Bhagavatam, we are hearing that for the Graha Medis, there are a lot of things are there to think. तो भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि लोगों के पास, विशेष रूप से जो गृहमेधी हैं, उनके पास हजारों विषय वस्तु हैं सोचने के लिए, चिंता करने के लिए। Protavyaadini Rajendra, like that sloga is coming. Nirnam Sakasra. Yes, that sloga is. Yes, Prabhu. That sloga, there are so many varieties. Even if you are committed to this process and then we want to think about Krishna, we want to do devotional service, there are so many distractions are there. Like when we open our computer, lot of things are coming. When we are searching for something, many things are now artificial intelligence, so many technologies they are using to divert the people for their own profitable things. They are diverting the common mass of people.
तो हम देख सकते हैं कि इतने इतने विषय वस्तु हैं, हजारों हजारों विषय वस्तु। चाहे आप कंप्यूटर खोलिए, फोन पे इतने समाचार पत्र, इतने प्रकार के विज्ञापन, हजारों हजारों विषय वस्तु, राजनीति, खेल, समाज में लोग इतने इतने विषय वस्तु पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना पूरा समय, पूरी शक्ति लगा रहे हैं उसे। So Krishna is so giving. So if this stage, first stage, always thinking of Krishna, if find a little difficult, then the next level is Bhava Mad Bhakto, become my devotee and follow the regulative principle of bhakti process. Like become a sadhana bhakta, we can do the Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. In this way, we can gradually train our mind to think always about Krishna. Sorry, Prabhu, in between I missed, Prabhu. Maybe I think net, at my side some internet problem, or I missed some point, Prabhuji. Okay. The second point, Prabhuji, if we find difficulties to always think of Krishna, then Krishna is advising, giving the option like become my devotee, then follow the bhakti process, then under the guidance of the spiritual master, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. In this way, we can engage our mind in Krishna. Gradually, we will come to the level of always thinking of Krishna. Okay. Prabhu, your slide is still again stuck on the essence of essence. I'm there only, Prabhuji. ओके फाइन। तो दूसरा विषय बता रहे प्रभु जी कि अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में नहीं लग पा रहा है तो भगवान कहते हैं कि तब अपने मन को भक्ति के माध्यम से एक आध्यात्मिक गुरु के शरणागति हो करके और भक्ति की जो विधियां हैं उसमें युक्त होने का प्रयास करो, और तब सत्वः फिर धीमे धीमे क्रमशः आपका मन जो है वो चिंतन करना शुरू करेगा। Then next, then other always, it comes under the obeisances. We have to pray. In the Prabhupada mentioned that in India, thousands and thousands of temples are there. Krishna's temples are there, where everyone can go and take the darshan of deities. And then we have to bow down in front of the deities. And then we can worship the deities. In this way, we can train our mind to think always about Krishna. और तब कहते हैं प्रभुपाद जी कि इस प्रकार से फिर भगवान के इतने जगह पर स्थान हैं, उनके निवास स्थान, भगवान के इतने इतने स्थानों पर मंदिर हैं, वहां पर जाकर के भगवान को प्रणाम करना, उस अपने संबंध को स्थापित करने, पुनर्स्थापित करने की जो इच्छा है उसको प्रकट करना, और इस प्रकार से फिर हमारा मन जो है वो भगवान के चिंतन में लगना आरंभ हो जाता है क्रमशः। Yeah, Krishna is saying, Machitta Makkada Prana, Bodhayanta Paraswaram, Kadayantasya Mamnityam, Dushyanti cha Ramanti cha. Devotees, we need to have the devotee circle to discuss about Krishna. Krishna's pastimes, Krishna in philosophy, like Krishna Katha, we have to always, in the association of the devotee, we cultivate this discussion, then we can able to fix the mind. Not only fix the mind, then the devotees, we will become very happy in these activities. और तब क्रमशः जो है जब भगवान के ऐसे भक्तों के संग में परस्पर बोधयंतम करते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं, तब भगवान के संग में ये श्रवण कीर्तन भागवत विधि में युक्त होने से क्रमशः ये जिह्वा के माध्यम से और फिर कर्णों के माध्यम से और फिर धीमे धीमे उनका मन जो है, मन से वो भी वहां पर नियोजन होना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। So by doing these 4 activities, Manmana Bhava, Madbhakto, Madhyaji, Mam Namaskuru, Krishna is saying that, you will definitely come to me. और तब भगवान कहते हैं कि इस प्रकार करने से
निश्चित रूप से तुम मेरी तरफ आओगे, मुझे प्राप्त करोगे। तो next slide. So, like Krishna says that in the previous sloka, it's number 33, Krishna is saying, Kim punar brahmanya punya bhakta rajarishya tada anitya masukam logam imam prapya bhajasvamam. This sloka is the continuation of the previous sloka. Like, like Krishna is talking about everybody can, become the devotee of Krishna, and then they can attain their life perfection. So here Krishna is talking about even those people are there. What about the position of how much more this is so far the righteous Brahmanas, the devotees, and the saintly kings? Then further Krishna is saying that Anityam Asukam Logam Imam Prapya Bhajasve Mam. So Krishna is saying that this world is a miserable, this world is a temporary, Anityam, this is the temporary world, the Asukam, this is a miserable world. So you should not come to this world, this material world. Somehow or other, you come here in this material world, but only one thing you have to do, that is engage in loving service unto me. जैसे कि पहले वाले श्लोक में, क्योंकि उसी के आगे भगवान आज बता रहे हैं कि वहां पर बताया गया कि इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर, क्योंकि बहुत क्षणिक है और दुखमय है, ये अनित्यम है और सुखम है, तो ऐसे लोक में आने पर क्या करना है? प्राप्य भजस्वाम, की किसी भगवान को प्राप्ति के लिए प्रेमा भक्ति में लगना है। और उसी के आगे फिर आज बता रहे हैं कि प्रेमा भक्ति में कैसे लगना है। So we say that we have to do bhakti toward Krishna. How to do Krishna? How we have to think about Krishna? That also explained in the chapter 18, attaining the supreme, text number 9. Kavim Puranam Manusasitaram Anuraniyamsam Anusmareya Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. So Krishna here saying, how we have to worship him, how we have to meditate upon the Supreme Person. As one should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. Krishna knows everything. Kavim, Krishna is the Kavim, means he knows everything, past, present, and future. He knows everything. When we are meditating about Krishna, we have to think that Krishna is a Kavi. As further, as who is the oldest? Krishna is the oldest person. Is a Puranam, oldest person, who is the controller, who is smaller than the smallest. Aniyor Aniyamsam, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable. Achintyam. Krishna is Achintya, and who is always a person. He is luminous like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. Aditya Varnam Tamasa Parastat. So in this way, we have to worship Krishna. Krishna is giving here the guidelines, how to worship him, how to remember him. तो इस 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं बहुत अच्छे रूप से कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवत प्राप्ति के बारे में बताया गया कि अब वो जो प्रेमा भक्ति करनी है तो वो कैसे करनी है, तो भगवान का कैसे ध्यान करना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, कि वो सभी कुछ जानते हैं, पुरातन, सबसे प्राचीन, आदि पुरुष हैं, नियंता है, सब कुछ को वही नियंत्रण करते हैं, लघुतम से भी लघुतर हो जाते हैं वो, और प्रत्येक की पालन करता है वो, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अधोक्षज हैं, अचिंत्य हैं तथा नित्य पुरुष शाश्वत हैं वो। इस रूप से उनका ध्यान करें और सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे, और वो दिव्य रूप में है।
So we may think that, Krishna is telling, you always think of me, worship me. How it is possible in this material world? Maybe Krishna is telling, maybe this is applicable in the age of Sakti Yuga or Treta Yuga or Dwapar Yuga is possible. Now we are in the age of Kali Yuga, the degraded. We are all, like Bhagavatam itself saying that, all the people are lazy and unintelligent and they are easily disturbed people. How it is possible? Always think of Krishna. Maybe we will ask this question. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कैसे संभव हो सकता है। लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, भगवान के बारे में सोचना, ध्यान लगाना, मन लगाना, ये तो सत्युग की बातें ठीक है, लेकिन इस कलयुग में जहां पर इतना विचलन है, ऐसे वातावरण में, ऐसे दूषित कल्मश वाले वातावरण में कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं सदैव। तो प्रभु जी कह रहे हैं ये प्रश्न है सबके लिए। So for that reason only Krishna himself came as a Chaitanya Mahaprabhu, and he demonstrated that one, how always think of Krishna. He lived as a living example. Krishna himself came as a Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, and he demonstrated to the all of us, how to do devotional service and how we have to be always remember Krishna. तो इसी को संभव करने के लिए इस कलयुग में सहज विधि के द्वारा और सर्वोत्तम विधि के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, जो राधा कृष्ण स्वयं जो है वो एकाकार होकर के और एक स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इसलिए उनको हम सबसे महान, सबसे अधिक वदन्नाय उनको अवतार के रूप में हम सब जानते हैं। So Rupa Goswami is praying to Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauradisve Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Patayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauradisve Namaha. और रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर रूप से इनकी प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं किस प्रकार से वो नमो महावदन्नाय अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, और जो कि वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण हैं, वो जो गौर वर्ण में आए हैं, और उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस कलयुग में विशेष रूप से इस संकीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम के द्वारा आश्रय लेकर के उसी विधि को जो सतयुग त्रेता उसमें थी भगवत की उनकी प्राप्ति, भगवान के ऊपर मन लगाने की जो योजना है उसको उन्होंने इससे संपूर्ण किया। Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. My net. Yes, Prabhu. Now we are, yes, Prabhu. In between. Yes, Prabhu. Yes, now it's clear. Yes. 1 second. It starts. Share. Can you able to see the? Yes, able to Prabhu. see that? Yes, Prabhu. Okay, Prabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is displayed, how to practically demonstrated the devotional process, and we have Sri Rupa Goswami, and we are all coming in the line of Sri Rupa Goswami, and they lived, like how
always it is mentioned in Chaitanya Charitamrita that Srila Rupa Goswami and Sanatan Prabhu, Sanatan, all they are 24 hours, almost 24 hours. They are doing devotional service. They sleep only 1 or 1.5 hour in a day. Sometimes even when they are doing bhajans, they that too they are avoiding. In this way, they are demonstrating how one can become man mana bhava, always remember of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद गण उनके साथ में जो आए थे पार्षद गण और विशेष रूप से षष्ठ गोस्वामी गण, उन्होंने अपने आचरण से अपने व्यवहार से प्रस्तुत किया नामाचार्य रस ठाकुर जी कि सदैव कृष्ण में उनका मन, सदैव कृष्ण के नाम का आशय रहते हुए उनका पूरा मन जो था वो कृष्ण में लगा हुआ था। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके पार्षद गण वो सबको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कलयुग में ही। So another pastimes I just want to narrate this Sarvabhauma Bhattacharya's is verses about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Actually, we all know that Sarvabhauma Bhattacharya is initially is a impersonalist and Mayavadi philosopher, and but he has a very good association with his brother-in-law, who is a great Vaishnava, Gopinath Acharya. When Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyasa, visited Jagannath Puri and stayed in under the with the shelter of Sarvabhauma Bhattacharya. तो एक और कथा हम सुन रहे हैं प्रभु के, ये बता रहे प्रभु जी की सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि शुरुआत में वो बिल्कुल वो मायावादी सन्यासी थे, नहीं सन्यासी नहीं, मायावादी थे वो और भक्त थे, और वहां पर वो जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब उनका साक्षात्कार हुआ, जब उनसे उनकी वार्तालाप हुई, साक्षात्कार हुआ, और तब उनके बीच में काफी शास्त्रों के ऊपर चर्चा हुई, आत्माराम श्लोक के ऊपर बहुत विस्तारित चर्चा हुई, और तब उस समझ पाया, जब हमको दर्शन भी दिया, उनको समझ पाया कि साक्षात ये भगवान, परम पुरुष भगवान है ये। और तब वो पूर्ण रूप से जो मुक्तिकामी थे वो बिल्कुल भक्ति में युक्त हो गए। Actually, after I will make it short. After that, Chaitanya Mahaprabhu, listened from him. Consider him as a like he's an elderly person. So Sarvabhauma Bhattacharya insisted that Chaitanya Mahaprabhu should learn Vedanta philosophy, and if you like, I can teach you. Like that, he told, and Chaitanya Mahaprabhu hear the Vedanta philosophy for 7 continuous days from Sarvabhauma Bhattacharya, and on the 8th day, Sarvabhauma Bhattacharya is asking, you are hearing from me for continuously 7 days. You didn't ask anything. Whether you are, if you are not asking anything, if you are raising any question, how will I understand that whether you understand the points or not? Like that, Sarvabhauma Bhattacharya is asked to Chaitanya Mahaprabhu. तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य पूरा बोल रहे थे 7 दिनों तक वहां पर बैठ करके, तो चैतन्य महाप्रभु चुपचाप श्रवण कर रहे थे, बिल्कुल विनम्र होकर के श्रवण कर रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो पूछ भी रहे थे, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैं जो बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कुछ शब्द नहीं बोल रहे थे, बीच में सुनते जा रहे थे बस। And then Chaitanya Mahaprabhu is saying that like he keeps himself very low position, and he said, whatever I'm a Vedanta Sudra, I am understanding, but the explanation you are giving, I am unable to understand. Like that,
Mahaprabhu said, then why, then gradually Mahaprabhu said that, why the direct meaning you are twisting and then you are giving it in monism philosophy, like that he asked. Then Sarvabhauma Bhattacharya is asking about, like, Mahaprabhu, can you explain about this Atmarama verse? And Chaitanya Mahaprabhu said, okay, I will explain, but before I want to hear from you. Like that he said. Then Sarvabhauma Bhattacharya is giving for this 9 like different purport for that slogan, and after hearing that, without touching that one, Chaitanya Mahaprabhu is giving another explanations to Sarvabhauma Bhattacharya. Then Sarvabhauma Bhattacharya understand that this is not possible by a human. He may be he is bewildered that. तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि 7 वर्ष के पश्चात क्या आप कुछ बोल रहे हैं, क्या आप कुछ समझ पाए? तब चैतन्य महाप्रभु को बोलना शुरू किया कि आपने तो भागवतम के इस पूरे जो ये वेदांत का जो अर्थ है वो इतना साफ साफ है, लेकिन आपने इसको पूरा ढक दिया है, पूरा आपके जो व्याख्याएं हैं उसको पूरा ढक दिया है। तो लगा रही ये क्या बोल रहे हैं ये? तो बोले ठीक है, अगर मैं ऐसे आपको लग रहा है कि मैं ढक दिया तो आपको पता है तो आप बताइए। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उसके बहुत सुंदर रूप से उसके व्याख्यान देना शुरू की, अलग अलग व्याख्याएं, बहुत विस्तारित व्याख्याएं। ये आत्माराम श्लोक के ऊपर उनकी व्याख्या, चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या 2 बार हुई है चैतन्य चरितामृत में, इनके साथ में और सत्यपाद गोस्वामी के साथ में, बहुत विस्तारित अलग अलग 64 अर्थ उन्होंने बताए फिर आत्माराम शब्द के। और तब वो पूर्ण संतुष्ट, ये जो बता रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये तो साक्षात भगवान ही है। यस Yes. So after that, Sarvabhauma Bhattacharya is accepting Krishna as a supreme personality of Godhead. Sarvabhauma Bhattacharya himself saying that because of his brother-in-law Gopinath Acharya is a devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Because of Gopinath Acharya's mercy only, I can able to get the association of Chaitanya Mahaprabhu, and now I am relieved from this monist Mayavadi philosophy. और तब उनको समझ में आया कि देखिए मेरे जो मेरे बहनों ही हैं वो तो सदैव जो है वो इनका गुणगान करते थे, इनके बारे में बताते थे, मैं समझ नहीं पाए थे दिवस तक। अब उनके ही माध्यम से मैं इनकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगा। So after that, Sarvabhauma Bhattacharya wrote about 2 slokas, which we are going to discuss this one. This he written in leaves, and then he given to this Jagadananda Pandita to show to Chaitanya Mahaprabhu. 2 slokas, and then Jagadananda Pandita went to that time Jagadananda Pandit and Damodar Pandit also there. So they went and going to give to Mahaprabhu. By the time Munadatta Prabhu took from them and wrote these 2 slokas in the wall. Then they given to the Chaitanya Mahaprabhu. After reading this 2 slokas, Chaitanya Mahaprabhu tear this leaves and throw away, because it mentioned that the Sarvabhauma Bhattacharya identified Chaitanya Mahaprabhu is the Krishna himself. So Chaitanya Mahaprabhu does not want to reveal his identity, but somehow devotees are so intelligent that before giving to Mahaprabhu, it was written in the wall, so all the devotees understand these 2 slokas. और तब सौर भट्टाचार्य जी ने उनके ऊपर उनके गुणगान में 100 श्लोक का वर्णन किया, शतकम, और विशेष 2 श्लोक जो थे वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक थे, वो लिख करके उनको दिया, उनको देने के लिए। और जब वो लेकर के आए जगदानंद पंडित जो थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि उनको देने के पहले उन्होंने भक्तों ने क्या किया, उसको दीवार पर लिख दिया। और जैसे ये जो है ये लिखा हुआ जो पत्र उनके पास पहुंचा, जब उन्होंने उस पर देखा, उनका ही गुणगान है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को सदैव भक्त मानते थे, विनम्र भक्त। वो ये गुणगान देख करके उन्होंने तुरंत उसको ऐसे फेंक दिया उसको, और किसी को मालूम न पड़े। जब कोई भगवान भी कहा करता था तो वो अपने कानों को बंद कर लिया करते थे। तो लेकिन भक्तों के बीच में ये पूरी चर्चा हो गई
और एक चूंकि श्लोक दीवार पर आ चुके थे, लिख चुके थे, सबने श्लोक को देखा। ये 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिनको चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। So this we'll read this sloka. Vairagya vidya nija bhakti yoga शिक्षा तम्यग पुरुषा प्राणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपत्ये. Translation: Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who has descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us real knowledge. His devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto his lotus feet. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 254. तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक है। आप लिखे श्लोक से ही उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि वैराग्य विद्या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे विशेष रूप से। और किसके बारे में? निज भक्ति, अपने स्वयं की, क्योंकि स्वयं वो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं वो। और यही शिक्षा जो है वो हम सबको देने के लिए वो आए थे, अपने स्वयं की भक्ति के बारे में और कैसे इस जगत से वैराग्य उत्पन्न किया जाए। We will read the next, the second sloka. और इसके साथ ही साथ में वो भी बता रहे हैं कि इसमें इसी में कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस शरीर में आए हैं जो स्वयं कृष्ण हैं, कृपा प्रदान करने के लिए, और मैं उनकी शरणागति लेता हूँ। यस प्रभु जी। Yes, sorry, Yes, Prabhu, Prabhu. I changed the slide before. It's okay, Prabhu. Okay. The second sloka is Kalan Nashtam Bhakti Yogam Nijamya Praduskritam Krishna Chaitanya Nama Avirbhustadasya Padara Vinde Gadam Gadam Liyatam Chitta Bringa. Let my consciousness, which is like a honeybee, take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who has just now appeared as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, to teach the ancient system of devotional service to himself. This system had almost been lost due to the influence of time. So, Bhagavad Gita also we are hearing that, this knowledge is lost in due course of time. Same way Sarvam Bhattacharya composed this sloka also. These 2 slokas is exactly positioning, how Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Krishna himself. आगे कह रहे हैं इस श्लोक में, आगे वाले श्लोक में जो दूसरा श्लोक है, कि मेरी चेतना जो है वो एक मधुमक्खी के जैसे है, और भगवान के चरण कमल के जो चरण कमल है बिल्कुल पंजरांतम है, वो बिल्कुल कमल के समान है। तो उनको पूर्ण रूप से उस कमल का आश्रय लेने दें, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने दें, जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने उसी प्राचीन भगवती के ज्ञान को फिर से पुनः हम सबको देने के लिए वो आए हैं। हालांकि बीच में ये परंपरा समय के साथ में नष्ट हो चुकी थी, और ये ज्ञान जो है ये इसकी अनुभूति ये प्रदान नहीं की गई थी। So I just narrate one more pastimes of Chaitanya Mahaprabhu with the devotees. Actually, Jagadananda Pandita is brought from sandalwood oil for Mahaprabhu. For it takes a long time to prepare, and he brought in one earthen pot, and he brought to Chaitanya Mahaprabhu and ask him to go given to Govinda, and ask him to give to Chaitanya Mahaprabhu, and to put massage on his Mahaprabhu's head, so that it will be good for Mahaprabhu. So when Govinda went and informed Chaitanya Mahaprabhu, please take this oil, and then this is brought from like Navadip by Jagadananda Pandita. Like that, Mahaprabhu is rejected, saying that I am a sannyasi. How can I use this one? No, I should not use this one. Then people may think different. So ask him to
take and give it to Jagannath, Lord Jagannath. Maybe they can utilize this scent. तो एक और कथा बता रहे हैं प्रभु जी की, जगन्नाथ पंडित जो थे वो महाप्रभु को विशेष रूप से वो उनको जो है उनसे उम्र में भी बड़े थे, तो वो उनका जो प्रेम था उनके साथ में वो थोड़ा उस प्रकार से, चूंकि आयु उनकी बड़ी थी तो उस प्रकार से वो उनको प्रेम करते थे वो। तो एक बार वो बहुत सुंदर सुगंधित इत्र उनको मिला, तो वो उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करना चाहिए, उनको इसको प्रयोग करना चाहिए कि इससे उनका मसाज करेंगे तो इतना वो कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, इतने स्थानों पर जाते हैं, तो इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो वो ला करके उन्होंने दिया और गोविंद को बोला, जो उनके पर्सनल सेवक थे, जो व्यक्तिगत सेवक थे, उनके गुरु भाई भी हैं और व्यक्तिगत सेवक भी हैं उनकी आज्ञा पर, कि आप इसको चैतन्य महाप्रभु को इसको आप उसको उपयोग करिएगा। तो उनके पास लेके गए, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल प्रभावित हो गए, ये क्या है, मैं सन्यासी हूँ, कैसे इतना सुगंधित तेल का उपयोग कर सकता हूँ, ये बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगा। और तब जगन्नाथ पंडित इतने इतने वो रुष्ट हो गए और उन्होंने पूरा बोतल को फेंक दिया, फोड़ दिया कि मैं लाया, चैतन्य महाप्रभु ने लगाया नहीं। और बाद में उनको मनाना, चैतन्य महाप्रभु को मनाना पड़ा, उनको मनाते थे वो, और वो रुष्ट होते थे। ऐसा उनका आपस में प्रेम था, आदान प्रदान था। यस प्रभु। Yes. After that, Govinda Prabhu informed Jagannatha Pandit. Jagannatha Pandit didn't say anything. After a few days, Jagannatha Pandit himself went to meet Chaitanya Mahaprabhu. Then Mahaprabhu said, "Oh, you brought this sandalwood. Actually very nice. You may take a lot of difficulties to prepare and bring this one. But however, I am a sannyasi. I cannot use this one. Better you can give it to Lord Jagannath. Maybe there they will use properly." Like that, Mahaprabhu is advising Jagannath Pandit. Then Jagannath Pandit said to Maharaj, "Who told I brought this sandalwood scent and all? Oh, somebody is telling lies. I didn't bring anything to you." Like that, then he took the pot and throw away and broken that pot. And Jagannath Pandit went to his other room and he locked and he fasted for 3 days. और तब जब वापस आए तो उनको मिलने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आपने कुछ लाया था, वो इत्र जो है उसका चंदन का, मैं उसको उपयोग नहीं कर पाया, आपने बड़ी कठिनता से लाया होगा उसको, कृपा करके आप उसको जगन्नाथ जी को दे दीजिए, जगन्नाथ जी के सेवा में लगाइए उसको। तो कहे कि किसने कहा कि मैं लाया था उसको, और तो वो सब तोड़ के सब फेंक चुके थे, वो बोतल सब कुछ, और वो कहा कि मैंने लाया था, कोई और, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और फिर आ गए, उसके बाद अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने, और 3 दिन तक वो कुछ खाए पिए नहीं, पूरा उपवास किया उन्होंने। So after that, Mahaprabhu went and knocked the door, and then he told Jagannath, "Yeah, I'm feeling hungry. Can you make today's lunch prasadam? So we will have." Like that, Chaitanya Mahaprabhu requested Jagannath Pandit. Then immediately he opened the door and you prepare bhoga, then I will go to take darshan of Lord Jagannath and come back. Like that, Mahaprabhu went. And then immediately he started preparing for a very nice, delicious bhoga for Chaitanya Mahaprabhu. And then, he served. Mahaprabhu told, you serve one more leaf also. Let us together, we will honor the prasadam. Then Jagannath Pandit said, "No, I will promise you, I will take prasadam. But, before that, I want to serve you. You have the thing. Then later we will have." Like that, he told. Then Mahaprabhu took. And then this is the incident. In this incident, if you outwardly we are thinking that he brought with love, but Mahaprabhu is said, he's stating the reason that I'm a sannyasi. You can use to give it to Jagannath. Jagannath is also the Lord himself. He can. We may think that why he can give it to Jagannath when Mahaprabhu is asking, but Jagannath Pandit is throw, in front of Mahaprabhu, he throw that one outside and, it's broken like pieces. How we cannot able to understand all these dealings, how much love is there. This is inconceivable dealings of Lord and his pure devotees. We cannot imitate
these kind of things, but we can know that, how much love they are having with the Lord. That we can understand from these dealings. और तत्पश्चात फिर जब 3 दिन के पश्चात चैतन्य महाप्रभु आए, उनको बोला कि आप आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाइए, कुछ प्रसाद बनाइए कुछ। तब इस प्रकार से फिर वापस आए, उनके बीच में फिर से पुनः वही जो उनका आदान प्रदान था वो फिर से आरंभ हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षदगण थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनका पूरा चेतना, कुछ भी उनके लिए उत्तम वस्तु प्राप्त होती थी अगर कहीं पर भी, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु को उसको उपयोग करने को दिया जाए, उनका बहुत ध्यान रखते थे, उनको बहुत पसंद करने के बारे में सोचते थे। ये सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को बाद में बोलते भी हैं, जब उनको दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना था, कि मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप समय समय पर रुष्ट हो जाएंगे मुझसे, फिर कैसे मैं प्रचार कर पाऊंगा। ऐसे उनको बोलते, जगदानंद पंडित को बोलते हैं कि आप तो मुझसे बड़े भी हैं, मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन ये सभी भक्त जो उनके पार्षद गण थे वो इतना प्रेम करते थे महाप्रभु को, उनका पूरी चेतना, पूरा उनका सोचने का जो सोच विचार, वो सब केवल महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए था। उनका पूरा मन जो है युक्त था। तो इन लीलाओं से हम ये सीखते हैं कि कितना प्रेम भगवान के प्रति, कितना प्रेम, किस हद तक प्रेम कर सकते हैं जीव, ये हमें सीखने को मिलता है। ऐसे बता रहे प्रभु। So in Chaitanya Charitamrita, it is mentioned that, when devotees come from Bengal to meet Chaitanya Mahaprabhu, in the daytime, Chaitanya Mahaprabhu is, reciprocate with all the devotees, and, he'll be very happy and conversing very nicely, everything. And in the night, Chaitanya Mahaprabhu is crying for the separation of Krishna. So from that, Chaitanya Mahaprabhu is teaching us that, we should always cry for Krishna, because we are away from Krishna. Like Krishna himself is saying that, you come to this material, anityam asukam logam, mam, imam prapya, mam bhajasva. Like Krishna is saying that, if somehow you should not come to this place, but you come, but you have to worship and come back to me. Krishna is eagerly waiting. Similarly, Mahaprabhu is also in the daytime is dealing with the devotees nicely, exchanging sweet exchanges, everything. In the night, he could not able to tolerate the separation of Lord Krishna, and he's crying throughout the night and discussing about his confidential associate with the pastimes of Krishna. And in this way, he's teaching us, like no one can say that, Krishna is saying that is not possible, because Krishna himself demonstrated it, how to be always think of Krishna. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो भक्त आते थे बंगाल से, उड़ीसा में, और उनका आपस में मिलन हुआ करता था, इतना प्रेम, इतना आदान प्रदान, तो सबकी चेतना जो है वो केवल चैतन्य महाप्रभु को पसंद करने में और सब भक्ति भाव में, अंगीकार में, सब भक्ति के अंगीकारों को युक्त किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के ये पूरा सिखा रहे हैं, ये जो कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण में जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, कैसे मन लगाया जाए, कैसे उनको अपनी भावनाओं से जोड़ी जाए, कैसे उनके भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु के पूरे इस वृत्तांत में, पूरी कथा में हमको यही देखने को मिलता है कि सबको वही सिखा रहे हैं वो, और सब एक दूसरे को भी वही सिखा रहे हैं। यस प्रभु। Yes, Prabhu. So in this way, Prabhupada mentioned in the purport that, Prabhupada repeatedly saying that these unscrupulous commentators, they are misleading the people for their personal benefit. Actually, this unscrupulous commentators, Prabhupada is referring to one of the Indian politician, Dr. Radhakrishnan. Prabhupada is, genuinely, he didn't mention his name. Actually, he's talk about his Bhagavad Gita. He's saying that, Krishna is saying directly that, is Manmana Bhava, Mad Bhakto. But in his commentary, he's saying that, Krishna is talking about not Krishna, but something unborn in Krishna, or something like that. He's trying to twist this direct meaning to the monistic philosophy. So Prabhupada is condemning in many places in the same purport.
तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे जो ऐसे कपटी भाष्यकार होते हैं वो तोड़ मरोड़ करके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य वैसे है कि ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान वो इसी प्रकार की बातों को आकर्षित करते हैं, ऐसी बात से लोगों को आकर्षित करते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान अगर से बोल रहे हैं कि मन मनाओ, अपना मन लगाओ, तो किस में लगाओ? भगवान में, जो भगवान के अंदर जो ब्रह्म है, जो कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोलते, वो बोलते हैं जो कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसमें मन लगाओ। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहा कि वो श्लोक को कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जो श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने बताया यहाँ पर कि भगवान के शरीर, उनके मन, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई पृथक नहीं है उसमें। वो भगवान जब कह रहे हैं मुझे, मतलब भगवान में ही। तो इस प्रकार से प्रभु जी कह रहे हैं कि ये विशेष रूप से जो ऐसे मायावादी भाष्यकार हैं वो इस प्रकार की जो भाष्य दिए हैं उससे लोग बहुत भ्रमित होते हैं। प्रभुपाद जी को यहाँ पर कोट करके उससे हमें बचना चाहिए, ये अज्ञानता है उनकी। जी प्रभु। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Actually, Prabhupada himself saying that because they do not know the Krishna, and they are like try to put their own mental speculations, and for their own benefit they are doing like that. And then also when for remembering Krishna also, Prabhupada given the two types of remembering Krishna. The demonic people also always remember Krishna, like Hiranyakashipu, like Kamsa, and Shishubala, and all we can see in these demonic people. They are also remembering Krishna. They used to say in Mahabharata, Saguni is the person is remembering more than anyone else, but it not in a favorable way. So Prabhupada is saying that that kind of remembrance will not help. We should remember Krishna in a favorable, loving way. आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असली लोग होते हैं वो भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, लेकिन वो ईर्ष्यावश करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कंस थे इत्यादि जो असुर लोग थे, या शकुनी महाभारत में बहुत चिंतन कर रहे थे, लेकिन वो प्रतिकूल रूप से, अनुकूल रूप से नहीं, जबकि भक्ति भाव में अनुकूल रूप से भगवान का स्मरण करना है, चिंतन करना है। So this always thinking of Krishna is a sadhaka level. It may looks very difficult, but it is possible. Krishna is also saying that by practice it is possible in the association of devotees and by the mercy of our spiritual masters and Guru Parampara. If we are sincere in our endeavor, and definitely, it is not possible by our own strength, but by the blessings and mercy of the acharyas, we can try to cultivate, always think about Krishna. Hare Krishna Prabhu. Sorry Prabhu, I was speaking and my mic was muted Prabhu जी, somehow that। तो यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि अपने बल से ये संभव नहीं, लेकिन अगर हरि गुरु वैष्णव के आशीर्वाद, उनकी कृपा से हम गंभीर हैं, लौल्यम और हमारी तीव्र इच्छा है, तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से संभव हो पाएगा कि हमारा मन जो है वो भगवान के चिंतन में वो सदरूप से लग पाएगा। So further, Krishna is saying that in the 12th chapter also, if you cannot be able to do just one sloka, then we will conclude this session, Prabhu. This like for example, Prabhupada is saying that this example is this sloka number 8.7, Tasmat Sarvesu Kaleshu Ma Manusmara Yutyacha Mayi Arpita Manobuddhir Ma Mevisesi Asamsayaka. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me.
you will attain me without doubt. Prabhupada says in the purport that, you don't need to leave your current occupation, current prescribed duty, but you can do, but, like we have to follow this, ma manusmara yutyacha. Similarly, we have to, whatever we do, whatever we are doing, that one, we have to remember Krishna, and then, then gradually we can develop ourselves. तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के माध्यम से सभी को कि अपना कार्य करते हुए सदैव भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें, और उन जो मन बुद्धि है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो भगवान को अर्पित करना है। तो यहाँ पर मन बुद्धि को अर्पित करके और तब आप शरीर से अपना कार्य करिए, आप जो आपका निहित कार्य है वो करते रहिए आप। तो इस प्रकार से वो आदेश दे रहे हैं कि ये हमें ये विधि सीखनी पड़ेगी, कि किस प्रकार से हम सदैव भगवान का स्मरण कर सके। So in 12th chapter, devotional service, Krishna is saying that, if you cannot able to fix your mind, then, like you have to follow the regulative principles of Bhakti Yoga. If you cannot able to do the Bhakti Yoga, then you have to work for me. Even if you cannot able to work for me, at least you whatever the accumulations you are doing, that one you spend for the common cause. In this way, the gradual progression is given in the 12th chapter, devotional service. So we will try our His Grace Yasumati Nandan Prabhuji always tell this one, like we have to try our maximum effort we have to put, then we will come to understand that by our own effort we cannot able to achieve this one. Then we have to ask for the mercy of the acharyas, then it will be possible. So same way, we have to try for that, and then by seeing our sincere effort, definitely devotees and Lord will help us to achieve this one. तो 12वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान बताते हैं वहां पर श्लोकों की श्रृंखला है कि किस प्रकार से पहले अपने मन को लगाने का प्रयास करें, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बुद्धि को लगाने का प्रयास करें, वो नहीं पा रहा है तो फिर हम लोग साधना भक्ति के माध्यम से अपनी इंद्रियों को, जो स्थूल इंद्रियां हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, और इस प्रकार से क्रमशः फिर हम लोग मन को भी नियोजित करते हैं भगवान की सेवा में। श्रीमान यशोमती प्रभु बता रहे थे अपने एक प्रवचन में कि किस प्रकार से हम लोग को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। जब पूरा प्रयास करेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए बहुत कठिन है, बिना प्रयास के नहीं। जैसे कोई तैरता है तो जब बहुत तैरने के पश्चात समुद्र में जाता है बीच तक, तब समझ में आता है कि मैं नहीं तैर पाऊंगा, दूर से खड़े होकर के नहीं। तो उसी प्रकार से अपना पूरा प्रयास जब करेंगे हम, तो उस प्रयास के माध्यम से हम लोग जो ऊपर के जो उच्च अथॉरिटी है उनकी कृपा को आकर्षित करते हैं अपने प्रयास से, और उनकी कृपा से ये संभव हो पाता है। गुरुजन की कृपा को आकर्षित करते हैं अपने प्रयास से हम लोग। जी प्रभु। So Prabhupada conclude there. Krishna is saying this world is, dukkhalayam saswadam, anityam asukam logam, all there. But Prabhupada, in the final word of the purport, Prabhupada write, therefore the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. So even though it is a dukkhalayam asaswadam, this world is anityam asukam, still one can live happily by taking up this devotional service. Not in the sense that, we will be keep on here. No, we have to get out from this world as early as possible. But during that time, if you sincerely follow the instructions of Srila Prabhupada and then executing the devotional service, even we can be live in this material world also very happy. Like Krishna is saying, Machitta Matkada Prana Bodhayanta Paraswaram Kadayantascha Mam Nityam Dushyanti Cha Ramanti Cha. In this way, we will live happily in this material world. Then we can go back home, back to Godhead. Hare Krishna.
प्रभुपाद जी यहाँ पर इस प्रकार से निश्चय निकालते हैं कि वो कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम जगत है, इसीलिए हमको पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में युक्त होना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, और जिससे कि इस जगत से बाहर निकला जाए। हाँ, और ये पथ कब हो पाएगा? जब हम लोग पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित पथ को ग्रहण करेंगे, तभी संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे, और अंततोगत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को भी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये अंत करते हैं श्री प्रभुपाद जी कह करके। Hare Krishna, Prabhuji. We can, I can pause here, Prabhuji. Then, Yes, Prabhu. So we can take some question, Prabhuji, if they have. yes, तो yes, किसी Prabhuji. कोई जिज्ञासा है, अगर कोई प्रश्न आज के विषय पर, प्रभु जी ने बड़े विस्तार में बताया है आज की कथा को चैतन्य महाप्रभु जी कथाओं के माध्यम से। कोई भक्त कोई जिज्ञासा है? यशोमती प्रभु जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? प्रभु जी कुछ बताना चाहते हैं?